all the celestial body we see in the sky, moon is the most beautiful and suspicious. Some days we can see the full moon, some day we see it looks like banana, and some day it can vanish fully. So what happens with the moon? Does it play hide and seek and hide behind the clouds, or it changes its shape? Let's find out the answer. The moon looks different time to time. Does it change its shape? No. It all happens due to the way it moves around the earth. Before we understand this, must recall the few common features of the moon that we have learned. You can see here, this is the earth, moon, and this is the sun. And this is the pathway where the moon revolves around the earth. It's revolving around the earth anti-clockwise, and the moon is in synchronous rotation with the earth, which means the same side is always facing the earth. And the moon revolves around the earth in a fixed orbit. It does not have its own light. It reflects the light of the sun. यहाँ से जो भी लाइट आती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए जब सन, अर्थ और अर्थ के बीच में जब मून होता है तो हमें मून नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जिस सरफेस पे लाइट पड़ती है वो सन की तरफ होता है और मून में कोई अपनी लाइट नहीं होती है, तो हमको इधर अंधेरा दिखाई देता है. Let's understand it more clearly. These are the phases of the moon. When the moon is between the earth and the sun, we cannot see the moon because the moon side, which is facing the earth, does not get sunlight. And we know that the moon does not have its own light, it just reflects the light of the sun. And this phase is known as the new moon or the birth of the moon. After 3 days, 3 दिन के बाद, we can see the some part of the moon. Why we can see some part of the moon? Because here you can see, यहाँ से लाइट आती है और ये रिफ्लेक्शन होते हुए हमको यहाँ दिखाई देती है. लाइट आई और यहाँ हमको दिखाई दी. ये हमारा अर्थ है. This is the day time and this is the night time. जो सन की तरफ जो फेज होता है वो डे टाइम हो गया और जो सन के अपोजिट होता है वो नाइट टाइम हो गया. तो यहाँ से हमको ये ऐसी रोशनी दिखाई देती है. आफ्टर 3 days we can see the some part of the moon. This phase is called the waxing crescent. This is the waxing. Waxing means increasing and crescent means ardh chandrakar. You can see this is, ये बढ़ रहा है ना, is it increasing? Yes, it is increasing, and this waxing crescent is symbol of the fertility, positivity. आपने शिव जी के सिर पे जटा पे देखा होगा ना, शिव जी यही वाला तो चंद्राकार लेके रखते हैं. हाँ, यही होता है ना, बढ़ता हुआ. ऐसा उल्टा तो नहीं रहता ऐसे नीचे की ओर. अगर आप यहाँ खड़े होते हो और यहाँ से आप देखोगे तो ये बढ़ता हुआ ऐसे दिखता है. कटोरी की तरह होता है ना जो उनके सिर पे चंद्र होता है, ऐसा उल्टा तो नहीं होता. और ईद का भी चांद जो हम देखते हैं वो वैक्सिंग क्रिसेंट देखते हैं, बिकॉज वैक्सिंग क्रिसेंट मून इज द सिंबल ऑफ द फर्टिलिटी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स. ओके, देन आफ्टर अ वीक फ्रॉम द न्यू मून और आफ्टर द 4 days, यहाँ 3 दिन के बाद हमने वैक्सिंग क्रिसेंट देखा. ओके, आफ्टर अ वीक, यहाँ से 7 दिन के बाद, आफ्टर अ वीक, after a week from new moon we can see the half of the moon. यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से रोशनी जब रिफ्लेक्ट होगी मून पर पड़ के, जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपको पूरा हाफ मून दिखाई देगा. दिस मून इज नोन एज द फर्स्ट क्वार्टर. आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, ओके, इट मीन्स 10वें दिन, you can see the more than half of the moon is visible. This phase is known as waxing gibbous. Waxing means increasing and gibbous means swollen part. ये थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है, waxing gibbous part. And after 4 days, 4 दिन के बाद,
हाँ, इसका मतलब कि 14th डे, 14वें दिन, 10 से 4 दिन जोड़ लीजिए तो 14वें दिन, ठीक है। 14 डेज एंड हाफ होता है, टोटल 15 डेज बोल सकते हैं, 15वें दिन। हाँ, यू कैन सी द फुल मून। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इफ द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन, how can we see the full moon? Huh? Why don't the earth covers the sunlight? Why we see the shadow of the earth? This is because बच्चों, the moon orbit is tilted by 5 degree with respect to the earth's orbit. तो यहाँ से लाइट इजीली यहाँ चली जाती है। ये इस तरह से होता है, मून का ऑर्बिट, ये अगर अर्थ है तो ये पूरा ऐसा नहीं होता है, ऐसे गोल नहीं होता है, ये थोड़ा एलिप्टिकल होता है एंड 5 डिग्री पे होता है। तो यहाँ अगर सन है, यू कैन सी इजीली यहाँ पे सनलाइट जा सकती है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया, इसका मतलब आप ध्यान लगा के सुन रहे हो। Okay, so now is it clear? Next, what happened? Now moon is reversing. The moon started reversing. Okay, it again start moving towards the sun. The next phase is called the waning gibbous. Waning means decreasing and gibbous means the swelling part. Okay, यहाँ से फिर आप देखोगे तो यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होकर के आपको लाइट आएगी। हाँ, फुल मून डे, फुल मून डे में आप जो है बहुत लंबे समय तक मून देख सकते हो। हाँ, सुबह होने तक भी, सुबह होते होते तक आप मून देख सकते हो, इतने पूरे पार्ट पे मून देख सकते हो। लेकिन यहाँ जो है आधे समय के लिए, मून जो है कम समय के लिए दिखाई देगा। ओके, as the moon light start decreasing or losing after 4 days, यहाँ फिर से 4 दिन के बाद देखो ये जितनी चीजें हुई है ना, ये फिर से रिवर्स होंगी। ओके, देन आफ्टर 4 days द moon start losing its light and this phase is known as the waning gibbous. Now again after 4 days we can see half of the moon from the earth's surface, which is known as the last quarter. This was the first quarter, पहले जो शुरू हुआ था, and this is the last quarter. Now after again 4 days, 26वें दिन में we can see the waning crescent. ओके, वैनिंग मीन्स लूजिंग एंड द क्रिसेंट मीन द अर्धचंद्राकार। यहाँ पे लूज होता हुआ क्रिसेंट है, ठीक है। अब फिर से जो रोशनी है वो कम हो रही है, यहाँ रोशनी बढ़ रही थी इसलिए वैक्सिंग क्रिसेंट, यहाँ रोशनी फिर से कम हो रही है, दिस इज द वैनिंग क्रिसेंट। 3 days actually, the moon again come into its first position between the sun and the earth. Hence, again we cannot see the moon. This phase is called the new moon. We cannot see the moon. Why? Because the moon does not has its light. मून के पास अपनी लाइट तो होती नहीं है, और जो सरफेस हम लोगों को दिखाई देता है वो सरफेस अंधकार में होता है ना। मून क्या करती है, इसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती, तो इधर से जो लाइट आ रही वो उधर ही रिफ्लेक्ट हो जाती, वो इस पार नहीं आती। लाइट को क्या पड़ी है कि इधर आकर के इसको लाइट दे। सूरज की रोशनी को तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है। और ऐसे भी वी हैव स्टडीड दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, और अगर कोई भी रेजिस्टेंस बीच में आता है देन द लाइट बैंड इटसेल्फ। ओके, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो यहाँ भी क्या होता है, लाइट बाउंस बैक हो गई तो इस पार्ट में हम लोगों को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है बच्चों। ओके, नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द मून। The moon take 29 days to revolve. कितना दिन लगा इसको कंप्लीट करने में? टोटल 29 days. And this time is known as the 1 month. The moon takes 29 days to revolve once around the earth, which is called the 1 month. तो बच्चों हमने ये तो पढ़ा है कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है then it is known as the 1 day. When the earth revolves around the sun, then it is known as the year, 365 days. Then what is month? The month is the time that moon takes to complete its revolution around the earth. The month word comes from the moon,
and we can see only 54% of the part of the moon because its rotation and revolution times are same. डू यू नो कि इसको 29 days लगते हैं रिवॉल्व करने में भी और 29 days लगते हैं रोटेट करने में भी. Its revolution and rotation periods are same. That's why we can see only the 54% of the part of the moon. So, and we celebrate festival like Eid, Buddha Purnima, Deepavali based on the phases of the moon. Festivals मना रहे हैं वो सारे फेस्टिवल किस पे बेस्ड होते हैं, इनके फेजेस पे बेस्ड होते हैं. जैसे बुद्ध पूर्णिमा, ईद, दशहरा, तो मून को तो थैंक्स बोलना चाहिए हम लोगों को, है ना. नेक्स्ट, वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या ये हम ऐसा फील करते हैं इन दैट द मून लाइट गिव्स द सूदिंग फीलिंग एंड वी कैन सी मून फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. जब चांदनी रात होती है ना तो हमें रात भर इस चांदनी को हम देख सकते हैं, इस मून को देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द सन्स लाइट इवन फॉर फ्यू मिनट. वाई? क्योंकि इसकी रोशनी में ना सिर्फ रोशनी होती है और इसकी रोशनी में हीट नहीं होता. इसके पास तो पेड़ पौधे हैं नहीं, कुछ है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, तो हीट को सारी वापस कर देता है. सूर्य भगवान को रख लो अपने पास और सारी रोशनी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज इट है लॉन्ग हिल्स एंड रॉक्स एंड द माउंटेन्स, है ना, बहुत हाई माउंटेन्स वगैरह हैं, तो वो क्या कर लेती हैं, सारी इसको लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से हमको बहुत अच्छी सी शूदिंग लाइट दिखाई देती है जिसको हमको रात भर देखना अच्छा लगता है. So this was the phases of the moon. Just recall once again what we have learned, that moon does not has its own light, it reflects the light of the moon. That's why on new moon day we cannot see the moon because the face which lit is opposite to the surface of the earth. And after 3 days of the new moon day we see the waxing crescent. Waxing crescent means the increasing crescent, or the moon is getting or gaining the light. Then after 4 days of this we see the first quarter of the earth of the moon, and after again 4 days we see the waxing gibbous, and after again 4 days we see the full moon. And why we see the full moon? Because it is 5-degree tilted, and so that's why it is not in the same axis, and that's why the sun's light easily reach to the moon's surface and it reflect its lights to the earth and we see the full moon. Okay, and this is again after 4 days, we see the waning gibbous. waning gibbous means अब जो है चंद्रमा की रोशनी कम हो रही है. Now then again after 4 days we see the last quarter, then after 4 days we see the waning crescent, and then after 3 days we see again the new moon. This cycle goes continue and continue, and the month word comes from the moon. The month is a time or a duration that a moon takes to turn around the earth, and its rotation period is also the 1 month periods. That's why we can see only the 54% of the part of the moon. So this was all about the phases of the moon. If you still have any doubt, please leave comment on the comment box. Thanks for watching.